I've been tattooing for about 6 years. Initially मैं यहाँ पे आती थी, यहाँ के जो ओनर हैं रमीज़, उनके पास मैं ड्राइंग और आर्ट सीखने आती थी. And then from there we started discussing the possibility of a female tattoo artist. At the time उस वक्त कोई commercial female tattoo artist नहीं थी, तो it seemed like a good opportunity. When I started off, उस वक्त it was difficult to get clients. People would be like, oh experience नहीं है, मुझे इसे tattoo नहीं कराना. Then from then एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी. I was living near to the studio. Everyone else was living really far away. There were bookings and the clients did not want to do it any other day and anyone else could not come in. And that is how I got my first client. I was able to somehow pull it off. Without electricity here, हम लोगों ने तार लेके generator की यहाँ पे electricity दी थी. It was a little silhouette of birds and 3 people got it done. मुझे अब 1 साल हो गया है टैटूइंग करते हुए. मैं हमेशा से ड्राइंग, पेंटिंग और स्केचिंग में हमेशा से इंटरेस्टेड थी बचपन से एंड आई हैव बीन रियली गुड एट इट टू. एंड टैटूज आर आल्सो समथिंग जो मुझे हमेशा से बहुत कूल लगते थे. जस्ट जनरली लाइक आई न्यू नथिंग अबाउट देम. मुझे इजाज़त भी नहीं थी टैटू बनवाने की, लेकिन बस मुझे कूल लगते थे. शुरू में आई ड्रॉप द आइडिया. आई वाज थिंकिंग कि यू नो आर्ट डजंट रियली मेक इनफ मनी इन लाइफ, बट आई रियलाइज दैट आई शुड जस्ट डू समथिंग दैट आई एम रियली गुड एट एंड आई लव. व्हेन आई got a bit of free time to myself, I quit my job and then I started training. 1 year after training, I started taking clients and here I am today. There have been times, I think, जब लोगों ने मुझे surprise reactions definitely दिए हैं. But I think it's mostly from my family, जो कि थोड़ा सा उनको at the thought of tattoos, they're a little bit uncomfortable because of how the usual norms are in the society. Friend circle में तो मुझे इस तरह का कोई reaction कभी नहीं मिला. It's always mostly supportive. हर जगह मैं probably most likely नहीं बताती कि I'm a tattoo artist, क्योंकि this is definitely something that would spark a discussion. And there are times when I don't want a discussion. My friends and family have always been very supportive. My husband also, he I think supported me the most when it came to pursuing tattooing as a career. He was the first person I made a tattoo on as well. मैं हमेशा ऐसे लोगों से surrounded हूँ जो कोई judge नहीं करता. Even my grandparents, even they're supportive. वो सिर्फ कहते हैं तुम tattoo नहीं अपने नहीं बनाना, किसी और के बना लो. Because of this taboo, बहुत सारे लोग आते हैं and they're like, oh मुझे tattoo कराना है लेकिन मेरी family को नहीं पता और मुझे किसी hidden spot में कराना है. Last week मुझे client ने contact किया था and she was like कि मैं फैमिली को नहीं बता सकती, so I need to come in on a Sunday to get it done because बाकी दिन मैं नहीं आ सकती. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. I don't think there's a very large amount of people who want to get tattoos कराची में. जो लोग मेरे पास आते हैं या तो उनका फर्स्ट टाइम होता है बिकॉज वो डर रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि हम बनवाएं नहीं बनवाएं. वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, बट देर वेरी इंट्रीग्ड. देर लाइक बनवाने का शौक है लेकिन कभी किया नहीं. हर किसी को फैमिली से परमिशन नहीं मिलती. Some people might think कि tattoos rebellion की तरफ लेके जाते हैं, but personally I feel like I did not start tattooing to be rebellious. It was just something that was a nice form of art. I understood that a lot of people want to express themselves through this, and there definitely was a need for a woman to do this because a lot of women are not comfortable themselves कि वो किसी male tattoo artist से tattoo करवाएं. And I think this is definitely something that has given me a lot of confidence in myself. A lot of people take tattoos very lightly. It's not as easy as it seems. I know a lot of good tattoo artists, they may make it seem very easy, but it requires a lot of practice, a lot of training, a lot of self-criticism, because आप जब अपनी गलतियाँ खुद नहीं पकड़ते, it becomes very hard to improve. शुरू में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा स्कैरी लग रही थी वो ये थी कि पेपर पे जब मैं कोई चीज़ ड्रॉ करती हूँ, आई कैन इरेज इट एंड द मिस्टेक कैन बी फिक्स्ड, बट इफ आई एम डूइंग इट ऑन अ ह्यूमन एंड इफ आई मेक अ मिस्टेक देन दैट स्टेज फॉर एवर. फर्स्ट 2-3 टैटूज आई डिड, आई वाज अ बिट नर्वस अबाउट देम. एज आई वेंट ऑन, उसमें आपको समझ में आ जाता है. बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती है टैटूइंग की जो यू गेट अ हैंग ऑफ, सच इज हाउ टू यू होल्ड योर मशीन, हाउ डीप यू नीड टू पुट योर नीडल, ऑल ऑफ दैट. एंड
and there's like thousands of different skin types. Everyone has a different type of skin. तो उसके ऊपर वो कैसा react करेगा ink. So I think year in I have gained a lot of experience with that. So अब मुझे like एक line बनाते ही पता चल जाता है कि इस client की skin किस तरह की है and how I need to go about it in order to achieve the best results. My favorite style would be the gothic kind of tattoos. I wouldn't get those tattoos on myself because that's just not the image I want. But I love making them. It just involves a lot of strong lines, bold colors. If I'm given an opportunity to design tattoos myself, I would probably go with a lot of fine line, something with a lot of contrast, fine lines, geometry. I don't think I'm thinking anything when I'm doing a tattoo. I'm so focused on what's in front of me. It's like almost like therapy for me. Tattoos तो obviously they are mostly memorable for the person, लेकिन उसकी वजह से the kind of bond you develop with certain clients, I do have the pleasure to have experienced that. I definitely want to be remembered as someone who is creative, fun, expressive, and someone who inspires other people to do what they might be looking to do or might not be able to do.